यूजबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स। असेसमेंट टूल्स की यूजबिलिटी जो है वो कैसे की जाती है। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए गुड असेसमेंट टूल क्लासरूम टेस्ट इज इट्स यूजबिलिटी। एक और बहुत ही अहम फीचर जो है किसी भी एक अच्छे असेसमेंट टूल का वो क्या है, क्लासरूम टेस्ट का इज इट्स यूजबिलिटी, वो इसकी यूजबिलिटी है। क्लासरूम टीचर्स आर वेल फेमिलियर विद इश्यूज related to the usability and practically of the test। जो क्लास का टीचर होता है, जो क्लास को पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा पहचान रखते हैं विद इश्यूज, उन इश्यूज की बारे में रिलेटेड टू यूजबिलिटी, जो कि उस टेस्ट को इस्तेमाल करने और प्रैक्टिकली ऑफ द टेस्ट और टेस्ट लेने के दौरान आ सकती हैं। बट दे नीड टू थिंक ऑफ हाउ प्रैक्टिकल मैटर्स रिलेट टू टेस्टिंग। लेकिन उन्हें ये सोचने की ज़रूरत होती है कि ये प्रैक्टिकल मैटर्स जो हैं ये कैसे रिलेट करते हैं टेस्टिंग के साथ। यूजेबिलिटी रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट कैन बी यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। यूजेबिलिटी जो है वो रेफर करती है कि टू एक्सटेंट किस हद तक विच ए टेस्ट कैन बी यूज्ड, एक टेस्ट कैसे यूज़ किया जा सकता है बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तलबा और टीचर्स के तौर पे, टू अचीव स्पेसिफाइड गोल्स, खास गोल्स को अचीव करने के लिए, इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैटर, किसी भी इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के हवाले से। इट आल्सो रेफर्स टू द to facilities available to test developers regarding both administration and scoring procedures of a test। As far as administration is concerned, जहाँ तक administration का ताल्लुक है, test developer should be attentive to the possibilities of giving a test under reasonable acceptable conditions। For example, suppose a team of experts decide on giving a listening comprehension test to large groups of examinees। In this case में test developer should make sure those facilities such as audio equipments or suitable acoustic rooms are available. Otherwise, no matter how reliable and valid the test may be, it does not be practical। रिगार्डिंग द स्कोरिंग प्रोसीजर्स ऑफ ए टेस्ट, जो प्रोसीजर है स्कोरिंग के वाले से किसी भी टेस्ट का, वन शुड पे अटेंशन टू द प्रॉब्लम ऑफ ईज ऑफ स्कोरिंग एज वेल एज ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर। फॉर इंस्टेंस, अज्यूम दैट composition tests are excellent indicator of language ability। Would it be possible to use it in large-scale administrations? How would the compositions be scored? इन compositions को कैसे स्कोर दिए जाते हैं? How long would it take to score them? कितना टाइम लगेगा उनको स्कोर देते हुए? All questions relate to usability of the test। तमाम क्वेश्चन जो हैं वो यूजबिलिटी से रिलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग के लिहाज से। Therefore, टेस्ट डेवलपर शुड बी वेरी केयरफुल। टेस्ट बनाने वालों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए इन सेलेक्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ए टेस्ट। द टेस्ट शुड बी प्रैक्टिकल, इट शुड बी easy to administer, easy to score and easy to interpret the scores। in other words, easy to use। a good classroom test should be teacher friendly। एक अच्छा क्लासरूम टेस्ट जो है वो टीचर फ्रेंडली होने चाहिए। ए टीचर शुड बी एबल टू डेवलप, एडमिनिस्टर एंड मार्क इट विद इन द अवेलेबल टाइम। जो अवेलेबल टाइम होता है उसके अंदर टीचर को वो टेस्ट बनाना चाहिए, लेना चाहिए और मार्क करना चाहिए, चेक करना चाहिए। एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेस, और जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उन्हीं के अंदर रहते हुए ये सारा काम करना है। क्लासरूम टेस्ट आर ओनली वैल्यूएबल टू स्टूडेंट्स व्हेन दे आर रिटर्न्ड प्रॉम्प्टली एंड व्हेन द फीडबैक फ्रॉम असेसमेंट इज अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट्स। जो असेसमेंट के हवाले से जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए।
इन दिस वे स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम द टेस्ट टेकिंग प्रोसेस। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट टेकिंग प्रोसेस से लेने के तरीक़ाकार से फ़ायदा हासिल करते हैं। द इश्यूज रिगार्डिंग यूजिबिलिटी ऑफ द टेस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द टेस्ट डेवलपमेंट। जो इश्यूज हैं, मसाइल हैं यूजिबिलिटी के हवाले से किसी भी टेस्ट के, इंक्लूड कॉस्ट ऑफ टेस्ट डेवलपमेंट and maintenance, time for development and test length, resources, everything from computer access, copying facilities, AV equipment to storage space, ease of marking, availability of suitable trained markers, and administrative logistics. Usability of assessment tools. The following are two very important aspects that contributes towards the usability of the test. Usability of the test के हवाले से तो बहुत ही अहम पहलू हैं। वो कौन से हैं? पहला है ट्रांसपेरेंसी। इन सिंपल वर्ड्स, ट्रांसपेरेंसी इज ए प्रोसेस, ये एक तरीकाकार है which requires from teachers to maintain objectivity and honesty for developing, administering, marking and reporting the results. ट्रांसपेरेंसी एक तरीकाकार है जो कि रिक्वायर्ड होता है टीचर्स को, उस्ताद के लिए, टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जो है, मकासद जो है उनको हासिल करने के लिए, एंड होनेस्टी फॉर डेवलपिंग, और होनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए टीचर्स को जब भी वो टेस्ट बनाता है, लेता है या फिर उसका मार्किंग करता है और जब रिजल्ट रिपोर्ट करता है, रिजल्ट बनाता है। ट्रांसपेरेंसी रेफर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट टेस्टिंग। ट्रांसपेरेंसी जो है वो रेफर करती है इन चीज़ों को, अवेलेबिलिटी ऑफ क्लियर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट अबाउट टेस्टिंग। सच इंफॉर्मेशन should include outcomes to be evaluated, formats used, weighting of atoms and sections, time allowed to complete the test, and grading criteria. Transparency makes students part of testing process. Transparency जो है वो स्टूडेंट्स को टेस्ट के तरीकाकार का हिस्सा बनाती है। No one could doubt any aspect of the testing process. किसी भी टेस्टिंग प्रोसेस के ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। इट आल्सो रिक्वायर्स सेटिंग रूल्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस। इसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि वो रूल्स बनाएं, जो असूल हैं उनको बनाने की भी ज़रूरत होती है, एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस, और टेस्टिंग प्रोसेस का रिकॉर्ड भी रखें। सिक्योरिटी। मोस्ट टीचर्स फील दैट सिक्योरिटी इज़ एन इशू ओनली इन लार्ज स्केल। ज़्यादातर उस्ताद ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मसला है, ये लार्ज स्केल पे होता है। हाई स्टेक टेस्टिंग, जब कोई हाई टेस्ट लिया जाता है। हाउएवर सिक्योरिटी इज़ ए पार्ट ऑफ बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ताहम सिक्योरिटी जो है ये एक दोनों का हिस्सा है, वैलिडिटी का भी और रिलायबिलिटी का। इफ़ द टीचर इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन डेवलपिंग गुड टेस्ट, अगर जो है टीचर जो है वो अच्छा टाइम और एनर्जी लगाता है, ताकत लगाता है टेस्ट, एक अच्छा टेस्ट बनाने में, डेटा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द कोर्स आउटकम्स, जो कि कोर्स आउटकम्स को कवर करता है, then it is desirable to be able to recycle the test or similar materials. This is especially important if analysis show that the atoms, distractors and test sections are valid and discriminating. In some parts of the world, कुछ दुनिया के ऐसे हिस्से हैं, cultural attitudes towards cooperative test taking are a threat to test security and thus the reliability and validity. As a result, नतीजे के तौर पे there is a trade-off between letting tests into public domain and giving students adequate information about tests.